Hello, ladies and gents. This is your host, CA Dost. So, first of all, I would like to say sorry for being so inconsistent. From now onwards, I'll try to be consistent as possible. And today's video is all about changes in income tax from 1st April 2025. So, before any further ado, let's dive into our today's video. So in my previous video we have discussed about a new budget 2025. There we have discussed slab rates and TDS. Now we'll go through different points that will change in income taxation. Okay, so first point is rebate under section 87A has been increased to rupees 60,000 from 25,000 if an assessee is opting new tax regime. अभी जो छूट मिलेगी वो 60,000 मिलेगी. जो पहले छूट मिल रही थी वो 25,000 मिल रही थी अगर वो एसएससी न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहा है देन ओनली. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट चेंज, अपडेटेड टैक्स रिटर्न हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 4 years फ्रॉम 2 years. पहले जो अपडेटेड टैक्स रिटर्न्स थी वो 2 years तक एक्सटेंड होती थी. अब इसको चेंज कर दिया गया है, अब ये 4 years तक एक्सटेंड होगी. और जो एडिशनल जो भी इसका टैक्स है वो ऐसा होगा. फर्स्ट ईयर 25% ऑफ एडिशनल टैक्स, सेकेंड ईयर 50% ऑफ एडिशनल टैक्स, थर्ड ईयर 60% ऑफ एडिशनल टैक्स एंड फोर्थ ईयर 70% ऑफ एडिशनल टैक्स. सो द नेक्स्ट चेंज इज benefits for IFSC. Sunset dates for commencement of operations of IFSC units of tax concession has been extended to 31st March 2030. जो भी IFSC के सनसेट डेट्स हैं वो टैक्स कंसेशन के लिए एक्सटेंड कर दिए गए हैं और जो न्यू डेट को एक्सटेंड किया वो 31st March 2030 है. सो द सेकेंड चेंजेस, प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी from an office in IFSC is exempt for non-resident under section 10 subsection 10D in spite of maximum premium limit. So next is premium paid by life insurance policy availed from an office of IFSC by non-resident is exempt under section 10 subsection 10D without any maximum premium amount. So the next change is tax exemption for startups. Under section 80 IAC, startups incorporated before 1 April 2030 will be provided 100% deduction of profit or gains for consecutive 3 years out of 10 years from the year of incorporation. अगर कोई startup जो कि इनकॉर्पोरेट या फिर स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल 2030 से पहले, तो उसको 100% डिडक्शन मिलेगा प्रॉफिट और गेन्स का 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए, 3 लगातार साल के लिए, 10 में से 3 लगातार साल के लिए. जो 10 साल है दैट विल बी काउंटेड फ्रॉम द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सो द नेक्स्ट चेंजेस, omission of section 206AB and 206CCA from April 2025. Section 206AB and 206CCA of Income Tax Act 1961 will be omitted to reduce the tax burden and tax compliances of tax deductors and collectors. So the next change is deduction on remuneration of partners. On first 6 lakh of book profit or loss, the limit is 3 lakh or 90% of book profit, whichever is higher. And on the remaining balance, it is 60% of book profit. So the next change is treatment of ULIPs as capital gain. Proceeds from ULIP will be treated as capital gain if premium paid exceeds 10% of assured amount or 2.5 lakh annually, then proceeds from ULIPs will be treated as capital gains and will be taxed accordingly. अगर अपने जो प्रीमियम पे कर रहे हैं ULIPs का वो 10% ऑफ एश्योर्ड अमाउंट से एक्सीड कर रहा है या फिर 2.5 लाख एनुअली एक्सीड कर रहा है, देन दैट ULIPs proceeds will be treated as capital gain and will be taxed accordingly. Thank you so much for watching the video till the end here. From your host CA Dost. And you can get connected to me through LinkedIn and Instagram, and you can find the links of the same in the description box.